Hello everyone, welcome to BYJU'S Exam Prep. I hope you guys can hear me, you can see me, I can already see a couple of you there in the chat box. क्या बात आज तो टाइम पे आ गए सारे. Prasun, oh, Nityank was there. I think the first guy to come was Nityank. Then I have Prasun, Harshita, Priya, Akash, क्या बात, Shrishti, not bad. It feels like welcomed when you start the session and you guys are there. एक अलग सी फील आ जाती है. Thank you for that. Okay, Muskan is also there. Muskan, what happened? You have been absent in the app sessions. तुम तो अच्छा कर रहे थे ऐप के अंदर, but you haven't come in last few days. I can clearly remember. Vishal, I'm good. Nityank, hello, hello. तो अभी करते हैं थोड़ा सा इंतजार और फिर करते हैं शुरू because I can see a lot of students are still joining. Okay, but मैं तब तक what are we doing here at BYJU'S for you? हमारे क्या कोर्सेज लाइंड अप हैं वो मैं बता देता हूँ, फिर हम सेशन भी कर लेंगे. टुडे सेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो इफ पॉसिबल इफ यू हैव गुड फ्रेंड्स शेयर विद देम, उनको बताना. और क्योंकि वी स्टिल हैव अबाउट 3 months टाइम, नॉट एग्जैक्टली 3 months बट अबाउट 3 months टाइम लेफ्ट फॉर क्लैट. सो यू हैव टाइम टू इम्प्रूव. तो ऐसा नहीं है कि टाइम खत्म हो गया, हम क्या करेंगे, हमारे पास तो टाइम नहीं वगैरह वगैरह. वी हैव टाइम, सो प्लीज शेयर, लेट योर फ्रेंड्स नो. उनको बताना, उनको भी ज्वाइन करने को बोलना, बिकॉज इंटरेक्शन मेक्स द सेशंस more interesting, है ना. All right, so I can see Shashank now. Tanya is there. Akash, thank you so much. मुस्कान तो ऐप वाले सेशन में भी आया करो. प्रसून सिंह, ओके दैट्स गुड. प्रसून कह रहा है कि ऐप पोस्टपोन हो गया तो उसको ज़्यादा टाइम मिला, बट प्रसून याद रखना सबको एक्स्ट्रा टाइम मिला है, तो कंपटीशन का लेवल सेम है, कंपटीशन का लेवल डाउन नहीं होने वाला, वो सेम रहेगा, है ना. ऑल राइट. मुस्कान ठीक है, बट लाइव क्लास की बात तो अलग ही होती है ना. तो चलो अब मैं जरा बता देता हूँ जल्दी से व्हाट आर वी डूइंग हियर एट बायजूस फॉर यू गाइज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक यू गाइज नो ऑलरेडी क्रैश कोर्स हमारा थर्ड लॉन्च हो गया है, एंड इट्स क्वाइट पॉसिबल कि हम और बैचेस ना लॉन्च कर पाए बिकॉज स्टूडेंट्स इसके अंदर आ रहे हैं और टाइम हमारे पास कम है. तो इसे ज्वाइन कर लेना, क्या पता अगला बैच हो ही ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना. So please go for it, join. You would get all the world class features we offer, faculty, खतरनाक धांसू, expert guidance because some of the faculty members have been to NLUs, तो उनसे गाइडेंस मिल जाएगी, मेंटरशिप है, क्विज होते हैं, डाउट सेशन मिल जाता है, परफॉर्मेंस टेस्ट होते रहते हैं, तो जबरदस्ती पढ़ाई होती है. इन केस यू हैव स्टिल नॉट थॉट अबाउट इट, प्लीज डू कंसिडर and come and join. CLAT 23 वालों के लिए, because you guys don't have too much time left, only 7-8 months now, so we have launched the comprehensive preparation course part 2 or course 2. You can also take free trial. Okay, you would be taught by the very best in the industry, day-wise study plan, one-on-one interaction, weekly performance test and whatnot. So सब कुछ मिलेगा इसके अंदर. So if you're still thinking 23 whether to start or not, please remember guys, we have students who are preparing for last 6 months, so there are a lot of students who are already doing it. You should not delay it any further. थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, है ना, कैच अप करने में. इफ यू आर थिंकिंग ऑफ अ नॉन क्लैट बैच, तो MHCET, AILET, SLAT, BLAT, जामिया के लिए भी हमने दो बैच एक्चुअली, सेकंड बैच में लॉन्च कर दिया है. अगेन यू बी टॉट बाय द वेरी बेस्ट, यू विल गेट ऑल द इनपुट्स, एंड दिस बैच इज अबाउट नॉन क्लैट. सो हम इसमें नॉन पैरा बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा करवाएंगे, GK भी थोड़ा सा अलग करवाएंगे, एंड ऑल दोज थिंग्स वुड बी देयर. इट्स अ फैबुलस कोर्स. इन केस यू आर थिंकिंग कि मैं नॉन क्लैट भी थोड़ा सा ठीक से दूंगा या दूंगी. ओके, और राइट, लेट मी सी और कौन आ गया भाई. तो देखते हैं अभी. आई थिंक वी हैव गुड नंबर्स, काफी लोग आ गए, तो चलो करते हैं शुरू. नित्यान कह रहा है ये खुशखबरी दोबारा दोबारा भी मिल सकती है. यस, क्योंकि जून में काफी सारे प्रेडिक्शंस हैं. आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट, बट थिंग्स कैन टर्न अगली, है ना. बट लेट्स प्रे कि ऐसा ना हो और सब कुछ ठीक रहे, सब स्वस्थ रहे. तो शुरू करते हैं. लेट्स टेक अप अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आई गेट अ लॉट ऑफ क्वेरीज फ्रॉम स्टूडेंट्स दैट आई एम नॉट गुड एट RC, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस, इंग्लिश सेक्शन. क्या करूं मैं, अटक जाता हूं, नहीं होता मुझसे.
क्या करना चाहिए. ओके, सो लेट मी क्विकली टेक यू थ्रू सम पॉइंटर्स. कुछ पॉइंटर्स बता रहा हूँ विच कैन बी हेल्पफुल, बट याद रखना एवरीबडी, अल्टीमेटली यू गाइज हैव टू डू इट. मैं बता सकता हूँ, मैं कर नहीं सकता आपके जगह. इफ यू डोंट पुट द हार्ड वर्क, ऑल दिस इज जस्ट ज्ञान, है ना. तो और ज्ञान लेके कुछ होता नहीं है. लेट्स बी वेरी वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक. करेक्ट, ज्ञान की गंगा तो हर जगह बहती है, सबसे ज्यादा हमारे यहाँ बहती है. तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस करने पे गंगा आपके पास पहुंच जाएगी, बारिश होगी ज्ञान की. सो प्लीज डू दैट, डू सब्सक्राइब इफ यू हैव नॉट डन दैट येट. बट रिमेंबर, only gyan will not be helpful. Correct. So let me start with some pointers. Okay, just read the clip here, just read what is written here, and please confirm guys, can you read what is written, yes or no? जल्दी से पढ़ के देख लो, फिर चैट में बता देना कि हाँ हमने पढ़ लिया. जरा पढ़ के बताना जल्दी से. नित्यांक, yes, that is a possibility. But अब जल्दी से बताओ everybody, can you read this quickly, 3 seconds में, and पढ़ के समझ आया कि नहीं? I can bet 100% that everybody was able to read it, correct? And you may have also noticed that the words that are written there are not really correctly spelled. In fact, some of them do not even look like correct word. The words are all misspelled, correct? But you are able to read most of them or all of them, no problem. That means what? There are a lot of students, listen to me very carefully, there are a lot of students who think that reading is all about being aware of knowing every single word. Because अगर कहीं पे मान लो लिखा है cat, तो हम कैसे पढ़ते हैं? हम देखते हैं ये C है, फिर ये A है, फिर ये T है, फिर हमारा दिमाग कहता है cat है, right? That's what students think, a lot of students, and therefore they keep on wondering that how should I read? Because accuracy will come only when you can read correctly, है ना? Accuracy is the function of reading. If you can't read properly, accuracy will not come. A lot of students focus on every single word. So if they are reading this sentence, they would be like, we really read every word by. Correct? But this is not the case. How do we read? I'm pretty sure you guys have thought about it. You may know already. We read by the shape of words. This is a very scientific fact. We don't read words by looking at the letters. We recognize words by their shape. Correct? If a word looks like a word that we know, we recognize it. Otherwise, we can't. Let me give you a very simple game to play. Okay, हम game खेलने वाले हैं. कोई नाम नहीं मिलेगा, but खेल लेते हैं. What I'm going to do is, I'm going to show you a word. Okay, and move it as fast as I can. बराबर. Word दिखाऊंगा, गायब कर दूंगा जितनी जल्दी हो सकता है. You have to type the word in the chat box. जो वर्ड तुम्हें दिखेगा उसे टाइप करना है. Obviously, you have to recognize what word is it, and then you have to type it. है ना? So before I move on, let me just look at the chat box once. तो सब बताओ पहले, सब ready for the competition, है ना? गोल्ड मेडल मिलेगा तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक वाला. Ready? Okay. चलो. So the first word, everybody. Now please type it in the poll, type it in the chat and tell me what was the word. Okay, दिखा दिया मैंने, बड़ा आसान word था. Let me see who sends me the first correct answer. What was the word? Let's see who sends the first correct answer. Okay, देखो मैंने काफी टाइम दिखा दिया word. I think you guys can recognize it very fast, है ना? Okay, casualty, 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 casualty. Okay, good. I knew it. You guys are so smart. कोई problem नहीं है ना? Now let me ask you a question. Did you guys really read the word by recognizing every letter? C, A, S. तुमने वो word पढ़ा because it looked like a word you knew, correct? But अब जरा word को देख लेते एक बार कि word क्या था, है ना? अब जरा अपनी spelling check करो और word की spelling check करो. Was the word really casualty? That's what you have written. सबने casualty लिखा है, but is the word casualty? The word is causality. Causality means the reason behind an action. किसी भी इफेक्ट के पीछे जो रीजन होता है, that's called causality.
Now see what happened here. मैंने word लिखा है causality, but you wrote casualty because this word looked like casualty. You knew the word casualty and therefore you thought the word is casualty. Yes or no? जल्दी से बताना चैट में. करेक्ट. धोखा हो गया. काफी लोगों के साथ तो हो ही गया है ना. समझ आ रहा है हाउ डज आवर ब्रेन वर्क एंड व्हाई it's very important to have a strong vocab. It doesn't mean you have to remember everything. No. But कुछ और करना पड़ेगा. आकांक्षा is smart. Right? Okay. कोई बात नहीं. अगला सवाल. I'll show you another word. Okay. चलो जल्दी से देख के बताना word क्या है. Here is the word, guys. What was the word? अब देखते हैं. अब सब वीडियो पॉज करने में लगे होंगे. पॉज कर लो यार, कुछ समझ नहीं आया. यस एवरीवन, जल्दी से बताओ क्या दिखा वर्ड. टाइप इट इन द पोल. क्विकली एवरीबडी. वेरी गुड. नित्यांक ने बिल्कुल सही लिखा. मयूर ने भी सही लिखा. वेरी गुड. नाउ आई नो सम ऑफ यू, आई नो कुछ लोग क्या कर रहे हैं. कुछ लोग सोच रहे हैं यार ये पॉज मार लेता हूँ, स्क्रीनशॉट कर लेते हैं, है ना, गूगल ही कर लेते हैं. बट रिमेंबर, दोज ऑफ यू हु कुड रिकॉग्नाइज द वर्ड इंस्टेंटली वुड बी वे फास्टर. यस और नो. रियलिटी तो यही है. यहाँ तो कुछ भी चलता है बट एक्चुअल एग्जाम में तो नहीं चलेगा, है ना. बट आई एम वेरी ग्लैड मोस्ट ऑफ यू वर एबल टू रिकॉग्नाइज इट. नाउ लेट मी आस्क यू, पहले से वर्ड देखा है तो बेनिफिट होता है ना, और वर्ड पहले से नहीं देखा तो यू कांट रिकॉग्नाइज. दैट्स द अल्टीमेट ट्रुथ. क्योंकि शेप ही समझ नहीं आता, है ना. चलो नेक्स्ट वर्ड, लेट्स सी इफ यू कैन रिकॉग्नाइज. ओके, अगला वर्ड. ये तो कर लिया सबने. ओके, नेक्स्ट वर्ड. टेल मी द वर्ड जल्दी से एवरीबॉडी. अब सब सोच रहे हैं वर्ड था सेंटेंस था. मयूर, यस आई नो दैट. इतनी समझ तो मुझे भी है ना. अब यहाँ पे भाई ऑटो डिटेक्शन भी थोड़ा सोच में पड़ जाएगा कि ये क्या हुआ मेरे साथ ना. एटलीस्ट माहिता इज वेरी ऑनेस्ट. करेक्ट. माहिता इज लाइक यार ये क्या था, ये क्या हो गया, इसको समझ जाए. बट शी इज ऑनेस्ट, शी इज सेइंग नहीं पता, नो आइडिया. राइट. चलो अब इसमें पता चल गया कि भाई ऑटो प्रेडिक्शन इज नॉट वर्किंग. करेक्ट. ओके, सो ऑब्वियसली आई एम किडिंग. You will know probably never see this word in any of your CLAT exams. Correct. मतलब ये तो obviously I'm just showing you that or rather trying to defeat your auto detect. मुझे पता था कुछ लोग टाइप करके फिगर आउट कर लेंगे, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे गेम खेला है. बट what is the first learning, guys? First learning is that you should be able to recognize words. वर्ड का शेप अगर नहीं पहचानोगे, स्पीड नहीं बढ़ेगी. स्पीड नहीं बढ़ेगी तो आपके फुल मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, ओवरऑल अटेम्प्ट्स नहीं बढ़ेंगे, एंड यू माइट मिस इंटरप्रेट एंड देयरफॉर यू माइट not have high accuracy. Correct. Now second one, of course, the moment I tell this that you should be familiar with words, you should know the shape of the words, one question I immediately get from students is पूरी डिक्शनरी रट लूं? Should we memorize the entire Oxford Advanced Learner? क्या करें? I think the answer is well known. No, ये थोड़ी करना है. But increase your reading habit. For example, become more familiar with the words. Go through 333 high frequency words. Solve vocabulary related quizzes. Because you have to be aware of words. I still see students in batches where they say, what is the meaning of the word flaw? Flaw का मतलब क्या होता है? Now there are two possibilities. Either आप टाइम पास कर रहे हो कि चलो ठीक है फैकल्टी से पूछ लेते हैं, टाइम पास हो जाएगा,
और second is that you are taking your preparation very lightly. You're preparing for CLAT और आप फ्लॉ जैसे वर्ड में फंस रहे हो. Not a good sign, yes or no? तो मेहनत करनी पड़ेगी. Because the better you are aware of the words that you're facing, the better chances of interpretation. जब word ही पता नहीं तो interpretation फंस जाएंगे. But at the same time, you have to also be a master at contextual meaning. Contextual meaning we can figure out, right? Correct? If somebody is angry and is shouting at you, we will figure out कि ये कुछ तो अच्छा तो कुछ नहीं बोल रहा. So that's contextual meaning, right? When you ask for an iPhone and your parents get angry, no matter what language they use, we know what they mean. Correct? From contextual sense, we figure out क्या meaning है. A lot of students tell me this. A lot of students have told me this, that I am not able to figure out the meaning. Don't have to know the meaning. Try to figure out the contextual meaning. Contextual meaning means you have to look at the entire context. That's all. और ये कर सकते हैं, है ना? थोड़ा और आगे चलते हैं. Third is, a lot of students believe that they have to read the entire passage at the same time. And what happens is, they end up giving a lot of extra time to the passage and they panic. And then they attempt the question fast and their accuracy goes down. All these things are interrelated, yes or no? अब अगर आप हर रास्ते पे सेम स्पीड पे गाड़ी चलाओगे तो एक्सीडेंट्स हो सकते हैं. करेक्ट? आप मेरठ एक्सप्रेस पे 100 पे चला रहे हो और करोड़बाग में भी चला दिया तो एक्सीडेंट्स ही होंगे. So you have to recognize where to go fast and where to go slow. Correct? So Mayuj, I'll show you that word later. Okay? अभी छोड़ देते हैं उसको. तो पहले यहाँ पे डिस्कशन खत्म कर लेते हैं. Okay? That is name of a disease actually. So we need to read at the same speed throughout the passage. The answer is no. I have told this in multiple classes also, that slow down whenever the author's main point is coming and speed up whenever details and explanations and examples are there. A lot of students, even now, 3 months from CLAT, they don't do that. वो बिल्कुल मंत्र की तरह पढ़ना शुरू करते हैं एक ही स्पीड से पूरा. You have to treat different texts differently, right? आप उसे एकदम एक स्पीड में ड्रोन की तरह ड्रोन करते हुए नहीं पढ़ सकते, है ना? You have to vary your speed, so you have to be active. So this is something that will help you reduce time, and that is how your accuracy will be impacted. All these things are linked, but लोगों को समझ नहीं आता है. Let's move on. Now some students tell me repeatedly that I am not able to increase my speed. आप बोल रहे हो speed increase कर लो, मुझसे हो ही नहीं रहा. What do I do? And my speed is slow, so my attempts are less, or I panic. When I panic, my accuracy goes down. What I suggest is, try doing this with newspapers and even RC passages when you're practicing at home, not in the mocks or not in the actual CLAT. Before that, what do you need to do? Very simple but very effective exercise. I can tell you from experience. Use a timer, okay, if possible, probably a cheap stopwatch, or maybe you can use your mobile phone. Keep the internet off. Take an article, let's say 500 words article. Read the article as fast as you can for 1 minute. And then the moment 1 minute is over, read at normal speed. You do it 10, 20, 30 times, and you know what will happen? You would realize that when you read faster, you're able to understand as much or even better, your concentration is better, and you would feel that your normal speed is slow. This is a method used by elite athletes, correct? To increase their stamina, increase their speed. This is a very effective method. Try doing this. You can do it with anything, right? But we are discussing English. तो क्या करना है? रिपीट. कोई भी आर्टिकल ले लो 400-500 वर्ड का, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, कहीं से भी. रीड 1 minute फुल स्पीड, एज फास्ट एज यू कैन, एकदम पागलों की तरह. फिर स्लो हो जाओ, फिर अपने नॉट स्लो हो जाओ, नॉर्मल रेट पे आ जाओ 1 minute. Then again fast. Slowly and steadily, with 10-15 days practice, reading around 30-40 articles, you will see that your speed is going up because you'll be able to compare. You'll be able to see the benefit. So remember guys, I'm not saying read the entire passage at the same speed. Okay? In this practice, when you're practicing this is
very effective method of increasing speed, and therefore accuracy for sure. Speed and accuracy are interlinked, right? People don't realize that. टाइम बचेगा तो accuracy अच्छी हो सकती है ना, पैनिक करेंगे तो accuracy गिरेगी. So now let me know in the chat, everybody, are you able to follow what I'm saying here? Yes or no? Correct? समझ आ रहा है? Now you might not do it. That's of course a fear that I have. But if possible, by the next day, or maybe tomorrow, day after, whenever we meet on YouTube, let me know if you tried that. It's a very very interesting method. बहुत काम आता है. सौम्या, हेलो. तो एक बार ऐसे मोमबत्ती पे ऐसे हाथ रख के कसम खा के बता दो कि हाँ मैं करूंगा और आपको बताऊंगा आके. हम ऐसे आपका लेक्चर नहीं सुन रहे, हम करेंगे, बिकॉज अदरवाइज इट विल नॉट बी बेनिफिशियल, है ना. तो थोड़ा कसम चाहिए होगा, तो यू शो सिंसियरिटी, है ना. ओके, बहुत बढ़िया. मयूर, डू दैट, तभी तो बता पाओगे कि हो रहा है कि नहीं हो रहा, है ना. बिना किए क्वेश्चन करने से ना सिर्फ क्वेश्चन ही रह जाते हैं, आंसर नहीं मिलता. जस्ट इमेजिन इन 1960s ह्यूमन बीइंग्स आस्किंग चांद पे कैसे जाएंगे. somebody saying बिना गए पता कैसे चलेगा कैसे जाएंगे, और वो फिर गोल गोल घूमते रह जाते हैं. जाएंगे कैसे यार, कभी गए ही नहीं, पहले कभी गए नहीं तो जा ही नहीं सकते. तो फिर सब बैठे रहते हैं, कोई नहीं जाता. करेक्ट. यू हैव टू ट्राई इट आउट multiple times before you can take a call. Now, one more question that I get from students. Sir, I start reading the passage. When I'm in the middle of the passage, I realize समझ नहीं आ रहा, तो मैं पैनिक कर जाता हूँ. और worse, I read the passage till half, then I realize I'm not able to understand anything, but I have already spent time. So what do? I complete it. It's like eating a very bad plate of food. आधा खा लिया है, क्या करें, और आधा खा लेते हैं ताकि पेट पहले आधा खराब होना था पूरा ही हो जाए, हॉस्पिटल चलो. Is that a good thing to do? No, of course. And that is why make it a habit, everyone. Having a look at the questions must be done. Having a look at the paragraph you're going to read is also important. Maybe read the first 1 or 2 lines. If there are shorter paragraphs, read one line of each paragraph. If it's a big paragraph, no passage, no big small paragraphs, read one line from the middle, one in the middle, one at the end. Try to figure out किसके बारे में है, क्या बात कर रहा है. Now, some of the ज्ञानी people might say wastage of time. Agreed? 10 seconds. Better than reading the paragraph for 2 full minutes and then realize you can't do it. Understood? तो 10 सेकेंड वेस्ट करे, 120 seconds वेस्ट करे in an exam of 120 minutes, you have to take a call. Correct? And I'm telling you all this from experience. मैं तो करके बता रहा हूँ, सिर्फ ज्ञान नहीं दे रहा. Correct, everybody? है ना. Harshita says I tried that, it's very effective. Very good. Absolutely. करके देखना. Remember guys, my job is to show you the path. चलना तुम्हें पड़ेगा, है ना. It's like I am the guide who is going to take you to Mount Everest. खुद ही चढ़ना पड़ेगा. आज तक कोई भी गाइड के पीठ पे बैठ के नहीं गया माउंट एवरेस्ट, है ना. बहुत मुश्किल है दोनों के लिए. सो प्रीव्यू द पैसेज, वेस्ट 10 seconds, नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली ओके. आराम से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट वन, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, आई थिंक सम ऑफ यू ऑल्सो फेस द सेम प्रॉब्लम. दे रीड लाइक बस पैसेंजर्स. लाइन पे लाइन पढ़ते जाते हैं. देखा है बस में पैसेंजर होते हैं, खिड़की से बाहर देखते रहते हैं और ऐसे वो सीन निकलता रहता है. बैकग्राउंड में किशोर कुमार के गाने बजते रहते हैं, है ना, जिंदगी के सफर में. एंड बस चली जा रही है. दे हैव लीस्ट इंटरेस्ट इन व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड, व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड. उनको बस चलानी वैसे भी नहीं है, और जब डेस्टिनेशन आ जाता है उधर जाते हैं. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु रीड इंग्लिश आरसीज डू द सेम थिंग. दे स्टार्ट रीडिंग, then they reach the end, then they look at the question and they're like, अरे क्या समझ में नहीं आया मुझे. And that is why very important skill that you have to build is anticipation. Anticipate. If you can't anticipate, you cannot be good at reading fast and accurately. बिना anticipation के जल्दी और accurately पढ़ना बहुत मुश्किल है. Let me give you an idea. Okay.
Suppose a paragraph starts with this line. Okay. Now tell me, what do you think the author is going to say next? Will the author say that Indian agriculture can grow, or will the author say it cannot grow? What do you think the author will say next from these lines? Can you say? जल्दी से. आकांक्षा को लगता है ज्ञान की प्राप्ति हुई है. She is sad. Yes, please. Can you guys tell me whether the author is going to say it is possible, or is the author going to say it's not possible? जल्दी से बताओ. Right now, if you look at the language, guys, it says, if I say that Indian agriculture has the potential to double or even triple, many people will laugh it away. When I start by saying, if I say this, you will laugh, there's a very high chance that I would say you are wrong, because it can happen. Now, what will a bus passenger do? If I say Indian agriculture has the potential, many people will laugh, and then read next line, next line, next line. We can predict. How does it help? We already know what the author is going to say, so we understand the paragraph better. And when we do questions, we can do it better. For example, look at the next few lines. Okay. But the reality is that many countries have done it, and we can do it too, provided. Now, look at one more thing. It says provided. Now I can anticipate what is going to see next. We can see next, yes or no? I know what is going to come next. पता है मुझे. Provided का मतलब है the author is going to talk about conditions that must be fulfilled to arrive at an answer, or arrive at the situation that the author desires. We can do it provided. So the author will say X is done, Y is done, Z is done, A is done, B is done, C is done. We know. पढ़ के देख लो. That's exactly what the author is talking about here. Right? Now, look at the next line. At least this is what we can learn from. Now, from here to here, you can see the author is mentioning source, and we can anticipate that. We can learn from. क्या आएगा? Source आएगा. Now, do I have to read every single word? Indian, Chinese, Israeli agriculture, just read this book. All I need to read in this 100 word paragraph is the first line and few key lines like provided, or at least this is what we can learn from, and we practically can anticipate the entire paragraph. Yes or no? This is taken from Swaminathan, Swanomics, sorry, written by S. Ankleshwar Iyer. So I hope you get the basic idea, correct? This is how authors write. Learn to anticipate. Very important. Lastly, will we always get stuck? This is one good question I get from every student. Sir, 4 में 2 option eliminate कर देता हूँ, 2 में फंस जाता हूँ. Then I mark A, the answer is C. I mark C, the answer is A. What do I do? Now, one solution can be that whatever you think is correct, don't mark that. But I think that will backfire. मत करना, मजाक कर रहा हूँ. तो क्या करें? Obviously, this will not happen all the time. It does not even happen all the time. It happens with some questions. But then the elimination game has to be strong. And how do you eliminate? Look at extreme words. If the option is too broad, paragraph is about India, the option is talking about the entire world. The paragraph is about a state, the option is talking about the entire country. Too broad, too specific. Or it has some wrong information vis-a-vis the paragraph. It has some extra information vis-a-vis the paragraph. Or you do not know how to interpret the question. कई बार तो question ही समझ नहीं आता. Question says assumption, students think it's inference. Question says which of the following conclusion is most inappropriate. Inappropriate पढ़ते ही नहीं है. Which of the following will strengthen the argument? Except ही नहीं पढ़ते. ध्यान दो, कहीं ना कहीं आप अटक रहे हो, पक्की बात है. If 2 options are same, then the question is wrong. 2 options same तो नहीं हो सकते. There must be some kind of difference. Spot the difference. Correct. For example, let's have a quick look at this question. So just read the paragraph, everybody, and tell me done. जल्दी से. फिर मैं उस बीमारी का वाला वर्ड भी लिखाऊंगा, ठीक है? अभी तक तुमने सर्च तो कर ही लिया होगा. जल्दी से everybody.
भूमि, आई एम श्योर ऐसा होता है, बहुत लोगों के साथ होता है, बहुत स्टूडेंट के साथ होता है, नो प्रॉब्लम, है ना। Just read the paragraph and write done quickly, everybody. Very nice, cute, small paragraph, कोई टेंशन नहीं है ना. Now I'm going to show you the question. Okay, Garvit has read already. Now let me see if I'm blocking the view. If I am, then I will become smaller. Now I think you guys can read very easily, no problem. And tell me the correct answer, please. जल्दी से बता दो correct answer. Quickly, everybody. Fairly easy question. I think I would get all the correct answers, but just wanted to show you how to eliminate fast and accurately. So please send me the answers, guys. Okay, so I can see the answers now. I can see 1, 3, B, 1, 1, 3, B. I mean 1, 2, 3. अभी तक यही आंसर्स मिले. ओके, अब हो गया टेंशन. सी दैट 1 भी लग रहा है, 2 भी लग रहा है, 3 भी लग रहा है. 3 आंसर्स हो नहीं सकते. सो आई वेट फॉर 20 मोर सेकेंड्स बिकॉज ये एक ही क्वेश्चन है आज करने को, तो मैं 20 सेकंड और वेट कर लेता हूँ. लेट मी सी मोर आंसर्स. बट आई हैव गॉटन 1, 2, 3. दिस इज एग्जैक्टली द प्रॉब्लम वी फेस इन आरसी. हर स्टूडेंट को आंसर अलग दिखता है. मीन्स व्हाट? Either you are not able to figure out the question correctly or you're not able to eliminate choices correctly, है ना. Okay, so let's eliminate quickly. All right, 1, 2, 3 आंसर आ रहा है. Can we all agree that fourth very clearly is exact opposite of what is given in the paragraph, right? Now, so fourth is out. Second thing, it says inferred. Inferred means it's a conclusion that is unwritten. It is not the major conclusion of the paragraph. It's a minor one, but it should be unwritten ideally. Now look at option 1, everybody. It was in the pre-Renaissance period that the spirit of learning was manifested in science. Look at the information. Science made some progress in the Middle Ages, but the spirit of modern science was born with the Renaissance. Science in the Middle Ages struggled against restriction. The Renaissance brought about an interest in all things pertaining to men and thirst for new achievements. Spirit of learning was manifested in science. Scientists of the 16th century made the first effective protest against the medieval scientific method of acceptance theories before investigation. Francis Bacon pointed out that classical scientific disclosure conclusion. I can never find anything about pre-Renaissance period that the spirit of learning was manifested. I have no information to support this. So 1 very clearly does not look like a conclusion that can be based on the paragraph. So let's go to option 2.
Spirit of modern science was born in the Middle Ages. Science made some progress in Middle Ages, but the spirit of the modern science was born with the Renaissance. Correct? There are two problems with this option. First is it's written, and second, Middle Ages and Renaissance, though we know from knowledge the relation between the two, but this much is almost mentioned directly. Correct? Science made some progress. Spirit of modern science is born with the Renaissance. But inference should be ideally not written. So second lag to raha hai, but it's almost written. So maybe third is a better answer. You have to look at these differences. Correct? छोटे छोटे differences होते हैं.